हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इनसाइड इंडियाज 100 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स एंड मोर। यार वैसे आए दिन हम कितने इनॉग्रेशन वगैरह देखते रहते हैं। बिल्कुल कभी ऐसे। वो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे कोई हैं, मेट्रो आ गई हाँ है, मेट्रो आ गई, उसके रेलवे स्टेशन एक्सटेंशन, कुछ भी बनता ही रहता है, कुछ ना एयरपोर्ट्स, कुछ। अब जैसे डुलेरा सिटी वो हाँ। डेवलप हो रहा है। मतलब ये तो बहुत आगे जा रहा है। बहुत मतलब सही है, ऐसा नहीं कि rapidly किसी एक पर्टिकुलर हाँ स्टेट जी। में या सिटी में, ओवरऑल इंडिया ओवरऑल में जो है वो चल प्रोग्रेस रही और है। डेवलपमेंट चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो इधर डिटेल्स देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कितनी अच्छी बिल्डिंग The है। Indian government is formulating an ambitious infrastructure development plan aimed at revolutionizing nation's ports, roads, railways, and utilities. This blueprint, expected to define Prime Minister Narendra Modi's third term, envisions a massive investment of 100 trillion rupees over the next 5 years. It seeks to capitalize on funds from central and state governments as well as private sector contributions to expand existing infrastructure, build new capacities, and create projects that compete with global standards. Roads and highways, new work of connectivity. A cornerstone of this blueprint is the development of कमाल की 50,000 roads हैं। kilometers of access-controlled expressways at an estimated cost of 20 trillion rupees. These modern highways are designed to provide high-speed traffic corridors with controlled access and exits, ensuring connectivity within 100 kilometers of any location in India. Work on 25,000 kilometers is slated for completion in the next 5 years. The plan also includes revitalizing 53 highway projects spanning 5,214 kilometers through the Build, Operate, Transfer or BOT model to attract private sector investment. With an estimated cost of 2.1 trillion rupees, the aim is to have a third of highways built under this model, enhancing efficiency and reducing public expenditure. Shipping and ports building. ये तो A बहुत 2 जरूरी trillion है। rupees investment is earmarked for upgrading port infrastructure, including 2 mega ports at Vadhavan in Maharashtra and Galatia Bay in Great Nicobar. These projects aim to position India as a global shipping hub. 6 major ports, including Deen Dayal, Jawaharlal Nehru, and Cochin, are set to be scaled to mega port status to rank among the world's top 50 ports. To further boost the sector, a 25,000 crore rupees maritime development fund and a shipbuilding policy will be unveiled, strengthening India's shipbuilding capabilities and enhancing its competitiveness in global trade. Railways. India's railway network, the backbone of country's transportation system, will undergo significant modernization with an investment of 10 to Vande 12 Bharat. trillion rupees. The plan includes scaling up the Vande Bharat initiative, introducing passenger sleeper trains, metros, and parcel services under the scheme. Efforts will focus on improving track Kamal ki renewal, train. modern signaling systems, and manufacturing hydrogen-powered train domestically. These measures aim to enhance safety, speed, and passenger comfort while promoting sustainable transport solutions. मजे हैं यार सच में इंडियंस के। अच्छा एयरपोर्ट्स भी and है। urban infrastructure. The blueprint emphasizes the modernization of existing airports and the development of new facilities in smaller towns and cities. This expansion aims to enhance air connectivity across urban and rural areas, promoting regional growth. Urban infrastructure, a critical aspect of the plan, will receive increased attention, particularly through state and city governments. Smart city projects and urban transformation initiatives will be integral to this effort, addressing the unique needs of India's Roof rapidly देखे growing कितनी urban population. रूफ सीलिंग कमाल है। Coast. कोस्टल लाइन एंड वाटरवेज। The Sagarmala project, launched in 2015 to optimize India's coastline and waterways, will be expanded under the new plan. Currently, 802 projects worth over $65 billion are under various stages of implementation, with targets set for completion by 2035. The plan seeks to maximize the economic benefits of India's extensive coastline by improving logistics, reducing costs, and promoting coastal shipment. This will not only boost domestic trade, but also position India as a key player in global maritime logistics. Challenges and recommendations. The success of this blueprint depends on addressing several challenges. Experts emphasize
the need for improved contract enforcement and management to ensure efficient implementation. Additionally, social infrastructure, particularly in health and education, must be prioritized alongside capital investments to foster long-term human capital development. State governments, crucial partners in India's fiscal federalism framework, require continued capital expenditure support. Experts recommend revising the national infrastructure pipeline with updated targets and allocating a greater share of investment to the central government. विजन The तो है current plan echoes the transformative infrastructure initiatives of the late Atal Bihari Vajpayee's government, which introduced the Golden Quadrilateral Highway Network and rural road schemes. As the nation celebrates Vajpayee's 100th birthday anniversary this December, his vision continues to inspire India's infrastructure ambitions. The new blueprint not only aims to enhance India's global competitiveness, but also sets the stage for self-reliance, which is Atmanirbharta, sustainable growth, and improved standard of living for its citizens. With 100 trillion rupees in investment, the next 5 years promise to redefine India's infrastructure landscape. ये 1000 ट्रिलियन रुपीस का था ना 100 ट्रिलियन रुपीस उसको ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है और वाकई हर तरह के एक फील्ड में जस्ट काम नहीं चल रहा, हर सेक्टर पे जो है ना वो नजर आ रहा, ओवरऑल जो है वो ग्रोथ चल रही है। हर वक्त हम कोई ना कोई इनॉग्रेशन वगैरह जिस तरह हमने स्टार्ट में बोला था वो हम देखते रहते हैं। मतलब कोई चीज कोई जगह उनको रोक ही नहीं पा रही है। अगर पहाड़ आ रहा है तो उसमें टनल्स हैं और मतलब ऐसी ऐसी जगह पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी हुई है ना। लास्ट एक व्लॉग देखा था कि इंडिया की सबसे बड़ी टनल मतलब 11 किलोमीटर मतलब टनल्स बन रही हैं, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, फिर रोड्स की वो एक्सटेंशन हो रही है। अब देखा वो मुंबई दिल्ली मुंबई जो हाईवे उसके साथ तकरीबन 50 से ऊपर हाईवेज बन रहे हैं इंडिया में। सही है, कितनी ज्यादा जॉब क्रिएट्स होंगी, बड़ा अच्छा। और वंदे भारत का भी वो कह रहे हैं कि उसको लेके जाना, तकरीबन अभी शायद वो बता रहे थे कि 55 है, मैंने किसी रिपोर्ट में पढ़ा था या 60 है, अभी उसको ना 450 वंदे भारत लेके आनी है। और जिस तरह उसकी स्लीपर हमने देखी है इतनी वो भी शायद ज्यादा एडवांसमेंट मुझे लग रहा है यहाँ तो हो सकता है जैन में वो स्टार्ट हो जाएगी जो वंदे भारत स्लीपर जो ट्रेन है। उसके ट्रायल वगैरह चल रहे हैं और अब तो वंदे भारत को एक्सपोर्ट भी जो है वो उन्होंने करना जो ऑलरेडी है उसमें भी बहुत सी एडवांसमेंट की जा रही है और न्यू भी साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं। और याद है हमने एक वीडियो की थी एयरपोर्ट के बारे में, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है जेवर कुछ ऐसे करके, जेवर 30,000 करोड़ का उसके लिए बजट रखा 30,000 करोड़। हाँ काफी बड़ा जो है वो उसका बजट सबसे बड़ा है। तो इस तरह की काफी सारी जो है ना वो न्यूज हम देखते रहते हैं और बहुत ज्यादा यार खुशी होती है। और ये नहीं है कि किसी बहुत फेमस या किसी डेवलप्ड सिटी तक ही ये चीजें, आप कश्मीर तक श्रीनगर तक हो आए, आपको हर जगह जो है ना वो एडवांसमेंट और स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट नजर आएंगे। मुझे याद आ गई एक चीज, दिल्ली से ना श्रीनगर तक वंदे भारत चल रही है। वो कह रहे हैं कि उसका ना वो प्लान सेट हो गया, वो शायद आने वाले कुछ मंथ्स में ना वो चला देंगे। और ये भी नहीं है कि जस्ट प्रोजेक्ट अनाउंस होता है उस पे इतनी रैपिडली जो है वो वर्क किया जाता है, फिर फौरन आपको जो वो डेट्स देते हैं ना इनॉग्रेशन की उधर तक जो है काम भी जो है हर कॉर्नर तक कनेक्टिविटी जो है वो दी जा रही है। कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त, उससे बिजनेस वगैरह जो है वो कितना ज्यादा अच्छा और आसान हो जाएगा। तो इससे तो इंडिया की प्रोग्रेस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.